Hello. In last lecture, we have to discuss about unit number first, correct? Differentiable equation and its applications. Okay. Now, in this lecture, we will start your new topic, that is unit number second, and name of the topic is transformers. Okay, transformers. Okay, this is your unit number second. Okay, this topic contains two parts. First is Fourier transform. First part Fourier transform, and second part is Z transform. ओके, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इन यूनिट नंबर सेकंड, नेम ऑफ द यूनिट ट्रांसफॉर्मर्स, उसमें फर्स्ट पार्ट आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड सेकंड पार्ट इज जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म. Okay, in this lecture we will start Fourier transform. Now some basic concept. Suppose f of x be any function, defined in the interval minus infinity to plus infinity. Okay, f of x be function defined माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी. ओके, एक फंक्शन है आपके पास, उसका नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स, एंड दिस फंक्शन डिफाइंड इन द होल इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, नाउ सम बेसिक डेफिनेशंस. Some basic definition. Okay, definition first. इवन फंक्शन. डेफिनेशन फर्स्ट इज इवन फंक्शन. ये आपको मालूम है सबको. इवन फंक्शन क्या है? डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ minus x, then f of x is called even function. For example, cos x or x square, these are the even functions. Okay, now second definition, odd function. The function f of x defined in the interval minus infinity less than x less than infinity is said to be odd if f of x is equal to minus f of minus x. f of x is equal to minus of f of minus x. For example, sin x cube ... Okay, these are the examples of odd function. Okay, then next, the periodic function. The function f of x is said to be periodic, or the function f of x is said to have a period capital T. Capital T is period. Suppose f of x be any periodic function, then period of this capital T is equal to f of x. Okay, periodic function की definition क्या है? After some interval we get same function. Okay, after some interval we get same function. This is called periodic function. Okay, after some time or after some interval we get same repeated function, then we have to call periodic function. Okay, and the period of function, period क्या जाएगा? If f of x plus t is equal to f of x, then f of x is called periodic function whose period is capital T. Okay, for example sin x, उसका period क्या है? 2 pi. cos x, उसका period क्या है? 2 pi. Okay, ये सब देखे फर्स्ट ईयर में. Okay, periodic function क्या है? इवन फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन क्या है? Okay, periodic function. Okay, f of x plus t is equal to f of x, then t is called
period of a function. T is called period of a function. Okay, periodic function. Then next, the meaning of mod x less than or equal to a. उसका मीनिंग क्या है? mod x less than or equal to a. meaning of this minus a less than or equal to x less than or equal to a. Okay, mod of x less than or equal to a, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू ए. यहाँ पे इक्वल टू आ गया तो यहाँ पे क्या आता है? इक्वल टू. ओके, देन नेक्स्ट, some basic formulas of integration. इंटीग्रेशन e रेस टू ax इंटू कॉस bx इंटू dx. ओके, तो उसका आंसर क्या आता है? आपको मालूम है सभी को, इंटीग्रेशन e रेस टू ax कॉस bx इंटू dx. तो आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे जो है ना e रेस टू x एज इट इज, e रेस टू ax एज इट इज, डिवाइड में यहाँ पे जो है ना e का पावर x उसका कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? कॉस x का कोएफिशिएंट b उसका स्क्वायर in bracket this a multiply to this whole term, क्या जाएगा? a cos bx, then cos का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? प्लस यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन प्लस, देन राइट cos का डेरिवेटिव क्या जाएगा? b sin bx. यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है, cos का साइन क्या जाएगा? पॉजिटिव. cos है तो यहाँ पे साइन क्या आता है? पॉजिटिव. ओके, b sin bx. ओके, b sin bx. देन सेम रिजल्ट नंबर 6, इंटीग्रेशन e रेस टू ax sin bx इंटू dx. ओके, तो सेम आएगा e रेस टू ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a इंटू साइन bx एज इट इज, ए साइन bx. तो यहाँ पे क्या है? साइन. फॉर साइन निगेटिव आएगा, निगेटिव. साइन का डिफरेंशिएशन b cos bx. ओके, दिस आर द बेसिक फॉर्मूलेज. ओके, आल्सो u इंटू v रूल 7, लास्ट रिजल्ट 7, u इंटू v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या आता है? u इंटू v रूल इन डिफरेंशिएशन. देखो u एंड v, फर्स्ट चूज u एज बाय यूजिंग LIATE rule. Okay, choose u as by using LIATE rule. Then u as it is, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का डबल इंटीग्रेशन. यहाँ पे u as it is v का इंटीग्रेशन जो u है उसका डिफरेंशिएशन v का डबल इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे जो u है उसका अगेन डिफरेंशिएशन u डबल डैश, v का ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस u का ट्रिपल डिफरेंशिएशन v का फोर्थ इंटीग्रेशन प्लस डॉट 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 डॉट. दिस इज कॉल्ड UV रूल इन इंटीग्रेशन. ओके, UV रूल इन इंटीग्रेशन. These are the important formulas which are used in Fourier transform. ये फॉर्मूले आपको सब मालूम है, तो Fourier ट्रांसफॉर्म इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, तो क्या है? हाँ, इन Fourier ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट क्या है? Let f of x be any function defined in the interval minus x less than minus infinity less than x less than infinity. Okay, then some basic definition. First, even function f of x is equal to f of minus x. Okay, then second odd function f of x is equal to minus f of minus x. The next periodic function f of x plus t is equal to f of x. T is called period. Okay, then mod x less than or equal to a implies minus a less than or equal to x less than or equal to a. Next, these are the basic formulas of integration. Okay, now definition first, Fourier transform. तो क्या जाएगा? Fourier transform. फर्स्ट definition definition of Fourier transform. Let f of x, this is your definition of Fourier transform. Let f of x be a function defined in minus infinity less than x less than infinity. Okay, let f of x be a function defined in the interval minus infinity less than x less than infinity. Then
then f of lambda, capital f of lambda is called Fourier transform, is called Fourier transform of f of x, Fourier transform of f of x. Okay, f of lambda is called Fourier transform of f of x, that is f of lambda is equal to, यहाँ पे I will write Fourier f, okay, for Fourier transform of f of x. Okay, तो उसका मीनिंग क्या है? f of lambda is this capital F for Fourier. f of lambda is Fourier transform of f of x. Okay, f of lambda is Fourier transform of f of x. Okay, f of lambda is Fourier transform of f of x. Okay, and is defined as defined by f of lambda is equal to integration minus infinity to plus infinity f of u. This x can be written as f of u in the terms of u. F of lambda is defined as integration minus infinity to plus infinity f of u e raised to minus I lambda u into du. This is formula. Here lambda is parameter. Okay, lambda is parameter. This f of lambda is called Fourier transform of f of x. F of lambda is called Fourier transform of f of x, and this is denoted by f of lambda is equal to integration minus infinity to plus infinity f of u e raised to minus I lambda u into du, e raised to minus I lambda u into du. This integration is in variable u. इंटीग्रेशन किस में है? वेरिएबल में u में है. ओके, तो दिस इज फार्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, डेफिनेशन सबको समझ में आ गई. लेट f of x be a function defined in the interval minus infinity less than x less than infinity, then f of lambda is called Fourier transform of f of x, that is f of lambda is called Fourier transform of f of x. Okay, and it is defined by f of lambda is equal to minus infinity to plus infinity integration. Okay, f of u e raised to minus I lambda u into du. Okay, this is Fourier transform. Then same, the inverse Fourier transform, inverse Fourier transform. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका मीनिंग क्या है? द इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, द इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, द इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, तो देखो यहाँ पे f ऑफ लैम्बडा इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x. ओके, देन देखो अभी वी हैव टू दिस f गोज टू दिस साइड, तो क्या जाएगा? टेल मी f ऑफ x. f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ लैम्बडा. This is formula. Okay, inverse Fourier transform. Okay, here f of lambda is a Fourier transform of f of x. Okay, then f of x is called inverse Fourier transform of f of lambda. Okay, f of x is called inverse Fourier transform of f of lambda. तो f of x क्या जाएगा? उसका इनवर्स. किसका? f of lambda का. ओके, एंड दिस इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू 1/2 पाई. यहाँ पे मल्टीपल में आएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f of lambda e raised to I lambda x into d lambda. This is your inverse Fourier transform. Okay, inverse Fourier transform. f of x is equal to 1/2 pi integration minus infinity to plus infinity f of lambda e raised to I lambda x into
d lambda. Then f of x is called inverse Fourier transform of f of lambda. Okay, f of x is called inverse Fourier transform of f of lambda into d lambda. अभी देखो यहाँ पे for finding inverse we have to require Fourier transform. f of lambda क्या है? Fourier. तो for finding inverse we have to require Fourier transform. Okay, तो यहाँ पे क्या जाएगा? Fourier में 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f of lambda e raised to I lambda x into d lambda. Here this integration is in the terms of lambda. Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गया? लैम्बडा डी लैम्बडा, डी लैम्बडा आ गया, डी लैम्बडा आ गया, तो लैम्बडा एक्स यहाँ पे क्या है? लैम्बडा एक्स, यहाँ पे क्या है? डी लैम्बडा. कभी भी लास्ट में डी लैम्बडा आ गया तो डी लैम्बडा बिलोंग्स टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, इंटीग्रेशन किस में है? लैम्बडा में, तो वो क्या हो जाएगा? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो देखो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म f of x is called inverse Fourier transform of f of lambda and it is denoted by f of x is equal to 1/2 pi minus infinity to plus infinity f of lambda e raised to I lambda x into d lambda. Okay, e raised to I lambda x into d lambda. Okay, this is inverse Fourier transform. Okay, now we have to discuss some other functions that are Fourier sine and Fourier cosine transforms. Okay, Fourier sine and Fourier cosine transform. Okay, तो फर्स्ट क्या जाएगा? Fourier cosine transform. This is Fourier transform. Second, Fourier cosine transform. Fourier cosine transform. Okay, Fourier cosine transform. Fourier cosine transform. लेट f of x भी एनी फंक्शन, सेम कंडीशन. लेट f of x भी अभी यहाँ पे क्या जाएगा? इवन फंक्शन, फॉर बिकॉज cos इज इवन फंक्शन. ओके, लेट f of x भी इवन फंक्शन डिफाइंड इन minus infinity less than x less than infinity, then Fourier cosine transform. Then Fourier cosine transform. This is called fc of lambda. Fc of lambda. Okay, then let f of x be even function defined in the interval minus infinity less than x less than infinity. Then fc of lambda is called Fourier cosine transform. FCT. Okay, Fourier cosine transform. Okay, and it is defined as fc of lambda is equal to integration 0 to infinity f of u cos lambda u into du. This is formula. Okay, fc of lambda is called Fourier cosine transform, and this is defined as integration 0 to infinity f of u cos lambda u into du. Okay, integration 0 to infinity f of u cos lambda u into du. This is Fourier cosine transform. Okay, then same inverse Fourier cosine transform. Inverse Fourier cosine transform. Inverse Fourier cosine transform. तो देखो, for finding inverse Fourier cosine transform, we have to require Fourier cosine transform. Okay, and this is denoted by, और this तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा? f of x is equal to 1/pi integration 0 to infinity. For finding inverse we have to require Fourier cosine. तो क्या जाएगा? fc of lambda cos lambda x into d lambda, lambda x d lambda. This belongs to inverse. Okay, तो यहाँ पे क्या है? fc का मीनिंग क्या है? Fourier cosine and f of x भी Fourier cosine inverse Fourier cosine transform. Okay,
f of x is called inverse Fourier cosine transform and fc of lambda is called Fourier cosine transform. Okay, तो देखो for finding inverse we have to require Fourier, for finding inverse cosine we have to require Fourier cosine transform. Okay, this is formula. Okay, then same if given function is odd function. Okay, given function is odd function. If given function is odd function, suppose given function is odd function, at that time we have to call Fourier sine transform. Fourier sine transform. For Fourier sine transform. Sine is odd function. Let f of x be odd function. F of x कौन सा फंक्शन है? odd function. Defined in the interval minus infinity less than x less than infinity, then fs of lambda is called Fourier sine transform. कब? if f of x is odd function and it is defined as fs of lambda is equal to integration 0 to infinity f of u sin lambda u into du. Okay, Fourier sine transform. Okay, then similarly we have to define Fourier sine inverse transform. Fourier sine inverse transform. For inverse sine क्या जाएगा? This is f of x is equal to 1 by pi integration 0 to infinity. For finding inverse sine we have to require sine transform. Okay, तो क्या जाएगा? fs of lambda into sin lambda x into d lambda. Okay, lambda x d lambda, this belongs to इनवर्स. अब यहाँ पे क्या है? साइन, fs साइन, तो क्या जाएगा? साइन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, दिस इज f of x is called Fourier sine inverse transform. Okay, and fs of lambda is called Fourier sine transform. Okay, so for finding inverse we have to require Fourier. Okay, this is this Fourier sine and cosine, this depending upon nature of the function. If function is even, then we have to use Fourier cosine transform, and if function is odd, at that time we have to use Fourier sine transform. Okay, then basic difference क्या है यहाँ पे? Fourier sine and cosine starting from 0 to infinity, and Fourier transform starting from minus infinity to plus infinity. Okay, और एक रिजल्ट जो हमने पहले रिजल्ट देखे थे उसमें एक ऐड कर दो. रिजल्ट आपको मालूम है, वो रिजल्ट इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. उसका आंसर क्या मिलता है? आंसर बिलोंग्स टू टू पार्ट्स. 0 इफ f of x is odd. 0 आंसर कब आएगा? if f of x is odd. Okay, integration minus a to a f of x dx. Answer is 0 if f of x is odd. Okay, and if f of x is even, तो क्या जाएगा? 2 times integration 0 to a f of x dx. कब? f of x is odd, sorry even. f of x is even, तब क्या जाएगा? 2 times. कब? इवन. एंड फॉर ऑड 0. तो देखो यहाँ पे क्या था? माइनस ए टू ए, यहाँ पे क्या है? 2 times 0 to a. कब? f of x is even, and 0 if f of x is odd. Okay, so these are the basic formulas from Fourier transform. Okay.